तदपेक्षया दिग्देशकाला व्युत्पन्नो बालकः पंचहायन एकदा निर्गतं गेयः द्वन्तिं निशिगां पथि सर्वोदशतपदा स्पृष्ट कृपणां कालचोदिता तदा ततहमीशस्य भक्तानां समयोषिता अनुग्रहं मन्यमानं प्रतिष्ठं दिशमुत्तरं स्फीताञ्जनपदास्तत्र पुरग्रामप्रजाघरान् खेटखरपटवाटिश वनान्युपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रि निवभगन भुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनी सुरसेविता चित्रस्वने पत्र रथैर विभ्रमद भ्रमर श्रिय नलवेणुसरस्तंभ कुशकी चक गौहरम एक एवाति यातोह मद्राक्ष विपिन महत घोरम प्रतिभयाकारम प्यालो लोक शिवाजिरम परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रीटपरितो बुभुक्षितं स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्य उपस्पृष्टो गतश्रमं तस्मिन्निर्जमनुजे रण्ये पिपलोपस्थ आस्थिता आत्मनात्मानमस्थं यथा सुरतमं चिन्तयेत् ध्यायतः शरणं भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्या श्रुकलाक्षस्य हृदयासीन्मे शनैर्हरि प्रेमातिर्भरनिर्भिन्न पुलकाङ्गोति निर्वित आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्य मोभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तशुचापहम् अपश्यन् ससोत्तस्ते वैक्लव्यादुर्मना इव दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्य मवितृप्त इवातुरा एवं यतन्तं वियुजने मामः गोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्षणया वाचा शुच प्रशयमन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां सकृति यद् कुदर्शितं रूपमेतत् कामायते नघ मत्कामसनगैः साधु सर्वात् मुञ्चन्ति हृच्छयात् सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढामति हेत्वा बद्धमिमं लोकं गन्ता मज्जनमन्नतामति मतिर्मयि निबद्धेयं न विपत्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधोऽपि स्मृतिसमदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महात् भूतं नवोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं स तस्मै महता महीयसे शिष्णर्वनामं विददेऽनुकम्पिता नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटस्तुष्टमनः गतस्पृह कालं प्रतीक्षन् किमतो विमत्सरः एवं कृष्णमते ब्रह्मणशक्तस्यामलात्मनः कालं प्रादुरभूतकाले तडित सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवती तनुम् आर्वितकर्मनिर्वाणो न्यपतत पाञ्चभौतिक कल्पान्तहितमादाय शयानिं वसुधन्वत शीशैशोरनु प्राणं विविशोन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थाय यदं शुश्रूषित मरीचि मिश्रा सरिषयः प्राणभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्विहेषु लोकास्त्रीन् परियम्य स्कन्दितव्रत अनुग्रहान् महाविष्णु रविघात घातगतिः क्वचित् देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्मविभूषितं मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानसराम्यहं प्रगायत सवीर्याणि तीर्थपादप्रियस्रवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचितानां मात्रास्पर्शे छयामुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथै कामलोभमहं हतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्व तथात्माध्यानसाम्यति सर्वतदितमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणं श्रुतोवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवेश्वतम् आमन्त्रवीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुने अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कृते सारङ्गधन्वन् गायनमाद्यन्निदं तन्त्ररमयत्यातुरं जगत् जय जय श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यास नारद संवादे षष्ठोत्सव हरे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्णचंद्र भगवान को यज्ञ पुरुष भगवान को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को सौनकोवाच निर्गते नारदे सुत भगवान् बादरायण
श्रुतवास्तदभिप्रेत ततः किमकरोत् विभूषुतोवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो वदरी षण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणीदद्यो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदवाश्रयाम् यया सम्मोहितो जीवम् आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमो साक्षात् भक्तियोगमुच्यते लोकस्याजानतो विद्वांस सखरे सात्वत संहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहभयापः स संहितं भगवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमद्यपयामाश निवृत्ति निरतं मुनिः शौनकोवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वद्रोपेक्षको मुनिः कश्यपाबृहति मेतामात्मा रामः संव्यत श्रुतोवाच आत्मा रामसमुनयो निर्गन्थ अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतुकी भक्तिमित्थं भूतगुणो हरेर्गुणाक्षिप्तं मतिर्भगवान् बादरायणे अद्य गानमहदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिय परीक्षितोऽथरादर्शे जन्म कर्म विलापनं संस्थां स पाण्डुपुत्राणां भक्षे कृष्णकथोदयं यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतेषु वृकोदरा विद्गदाभिवर्ष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौडरीतिं स्म पश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरत विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदारुदब्धस्व कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तथा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिरात् तायिन गाण्डीवमुक्तेर्विशिखैरुपाहरे त्वाकर्म यत्स्नास्य शशिदग्धपुत्रा इति प्रियः बल्गुविचित्रजल्पैः ससात्वयित्वाच्युतमित्रसूत अन्वाद्रवदंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतं तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारोहद्विघ्नमनः रथेन पराद्रवदप्राण परेप्सुरुर्व्या यावद्गमं रुद्रं भयद्यथार्ग यदा शरणमात्मानमैक्षतः श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्ददे तत्समाहित अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छम् उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणपदमभिप्रेक्षं विष्णुं जिष्णुरुवाच अर्जुनुवाच कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानामो भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतिपरः मायां विविधस्य चिक्षक्ष कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसा विदस्य स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षण तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं चानन्य भावानां मनुध्यानाय चासकृत किमिदं स्वीकृतो वेति देवदेव च वेदम्यहं सर्वतो मुखमायाति तेज परमदारुणं श्री भगवान् वाच वेदितं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणमस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारो प्राणबाधं उपस्थिते न ह्यस्मान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्तत्रेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा सुतोवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनं परवीरः स्पृष्ट्वा पापस्तपरिक्रम्य ब्रह्म्यं ब्रह्माय सन्ददे संहन्त्यान्योन्यमुभयोस्तेजसि सरसंवृते आवृत्य रोदसी ख्वं च बभृतातेर्गवनिवृत्त दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा सांवर्तकम् ममं सत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनद्वयं तथा आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्दामर्षतां राक्ष पशुं रसनया यथा शिबिराय निसन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान्नम्बुजेक्षण मैनं प्रातरहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि यो सावनागसं सुप्ता नवदीन्निशि बालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं श्रियं जडं
प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् यः परप्राणो प्रपुष्णात्यघृणं खलः तद्वतस्तस्य हि श्रेयो यद्वसाद्यात् पुमान् प्रतिश्रुतिं च भवता पाञ्चाले विस्तृतो मम आहर्ष्य शिरस्तते मयि अस्ते मानिनि पुत्रः यद्दसौ वदतां पापम् आतताय्यात्मबन्धुः वर्तुः विप्रियं वीरं कृतवानुकुलपांसन एवं परीक्षितां धर्मः पार्थः कृष्णेन चोदिता नैतसितं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिवीरं गोविन्दप्रियसारथि नवेदयत्तं प्रियाये शोचन्ते आत्मजातहतान् अथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुश्रुतं वामस्वभावा कृपयाननाम च उवाच सा हन्यस्य बन्धनान् यनं सतिः मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः स्वरहस्य धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामस भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणप्रजारूपेण वर्तते तस्यात् मनोरथपत्न्यास्ते नान्वगादवीरसूकुभिः कृपि तद्धर्मज्ञ महाभागो भगवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्रास्तु पूज्यं वन्द्यमवीक्षण सह मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथामृतवत्सार्था रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः यहि कोऽपि तं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबन्धं सुचारितं श्रीसुतवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं सुमहत् राजा धर्मसुतो राजकीया प्रत्यनन्दत वचो द्विजा नकुलः सहदेवस्य युधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो येषान्ये यासतु योषित तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृत न भर्तुर्नात्मनस्सार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्यास सदृभुज आलक्यवदनं सख्युरिदमाहासन्निव श्रीकृष्णवाच ब्रह्मवधूर्न हन्तव्यम् आततायि वदार्हण मयि बोभय मात्मानं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सात्वतया प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यं मह्यमेव च श्रुतोवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हारदमथासिना मणिं जहारमूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्याहत प्रभु तेजसा मणिनां हीनं शिबिरान्निरयापयत् वपरं द्रविडादानां स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दौहिक पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्य चक्रुर् हरणादिकं जय जय श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणी निग्रहो नाम सप्तमोत्सव हरे नमः। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय, भगवान को जय, यज्ञ पुरुष भगवान को जय, राजकु आनंद को जय। श्रुतोवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णगङ्गया पुरस्कृते स्त्रियः ते नियोदकं सर्वे विलिप्य च वृषम्पुरा आवृता हरिपादाब्ज रजः पूतसरिजले तत्राश्रमं कुरुपते धृतराष्ट्रवधानुजं गान्धारीपुत्रशोकार्ध वृथं कृष्णा च माधव शान्तयामास मुनिभिर्हतबन्धून् सुचार्वितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्नवपति प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकै तद्दश पावनं दिक्षु शतमन्युरिवा तनुत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राः सैन्योद्धव संयुत द्वैपायनादिभिः विप्रै पूजित प्रतिपूजित गन्तु कृतमति ब्रह्मणं द्वारकां रथमाश्रित उपलेवेति भिधावन्तीमुत्तरं भयविह्वलम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम् अवे द्रपति मामीश सरस्तप्ता यशो विव कामं दहतु मा नाथं मामे गर्भो निपात्यतां
श्रुतोवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सल अपाण्डवमिदं कर्तु द्रोणेरस्त्रमबुध्यत तर्हि वाथमुनि श्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्ता न लक्ष्यास्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष तत्तेषामनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानं रक्षां व्यथाद् विभो अन्तस्त्वं सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया वृणोद्गर्भः वैराट्यः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं सा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसद्य समसाम्यद भृगुद्वः मा स्वमस्थां ध्येतदासरे सर्वाश्चर्यमये च्युते य इदं माया देव्या सृजत्यवती हन्त्यज ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह वृथा सती कुन्त्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकोकाच्छन्न मज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानं मुनिना मोमलात्मना भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रिय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् ईशानमहाग्ने पुरुषादर्शन दशत्सभाया वनवास गच्छत मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यास्त्रतस्सास्म हरे विरक्षिता विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यादपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभीरेधं मानमदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किञ्चन न गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशान मनादिनि धनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कले न वेद कश्चिद् भगवस्य चिकीर्षितं तवेह मानस नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वैष्यस्य यस्मिन् विषममतिर्नृणां जन्मकर्म च विश्वात्मन् न तस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं नृषीषु यादसु तदत्यन्तविडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् यते दशाश्रुकलीलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनयाय स्थितं सामां विमोहयति भीरपि यद्विवेति केचिदा उरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यान्वाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यं याचितोऽभ्यगात अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्म भुवार्थित भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानामविद्या कामकर्मवि श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि तं जना तयैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितं प्रभो जिह्वासमयं स्वित सुहृतो नुजीवन येषां न चान्यत् भवता पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसां के वयं नामरूपाभ्यां यदुभि सह पाण्डवा भवतो दर्शनं यर्हि हृषिकाणामिवेशितो नेयं स्वविशते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणं विलक्षितै इमे जनपदा स्वृद्धः सुपक्वौ स्वदिवीरथो वनाद्रीनद्जन्वन्तो हृद्यन्त तप वीक्षितै अथ विश्वेश विश्वात्मान् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमेवं छिन्नि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मे नन्यविषय मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दन्दा गङ्गे बौघमुदन्वति श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभानि दृग राजन्यवंशदहनान् पवर्गवीर्य गोविन्द गोदबीज सुरार तिहरावतारं योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्रुतवाच
पृथयथं कलपतैः परिणुताखिलोदयः मन्दं जहासां वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तां बाणमित्युपामन्त्र्य प्रविश गजसाह्वयं स्त्रियस स्वप्रं यास्य न प्रेम्णाराज्ञा निवारत व्यासादैरेश्वरे हागे कृष्णेनादभूतकर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासैरे नावुद्यत सुचार्पिता आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदाम्बदं प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मना पारक्यस्यैव देहस्य बहो मे सौहिण्यर्हिताहताम् बालद्विजस्वहिण्मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रहो न मे शान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भरतोर्धर्मयुद्धे विदो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वच स्त्रीणां मद्दत्तबन्धूनां द्रोहो यो शाविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेदीयैर्नाहं कल्पो व्यवोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्ब सूरया वा सुराकृतम् ओतहत्यं तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति हरे नमः। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय, पुरुष भगवान को जय, हर भगवान को जय, दामोदर भगवान को हरे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। सुतोवाच इति वितप्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वैश्वरणभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रव्यासधौम्यदयस्तथा भगवानपि विप्रहर्षे रथेन सधनञ्जय सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवस्योत्तमिवामरम् व्रणैमो पाण्डवा भीष्मसानुगा सचक्रीडा तत्र प्रमर्शय सर्वे देवर्षयस्य सत्तम राजर्षयस्य तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्य भगवान् बादरायण प्रियदश भरद्वाज शशिशो रेणुकासुत वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रीतो गृत्समदोषितः कक्षिवान् गौतमो त्रिश कौशिकोऽथ सुदर्शन अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मराता दयोबला शिशेरुपेद आजगुं कश्यपाङ्गिरसादय तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तद् प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायायोपात्तविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयैरन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहोन्यायं यद्वयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्हता क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रय संस्थिते तीरथे पाण्डुप्रेथा बालप्रजापदो युष्मत् कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकपतिं मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवता च यदा प्रियं सपालो यद्वसे लोकोपायोरिव घनाबली यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृगोदर कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् नह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदविदिशतं यद्विजयिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथः पायि प्रजाप्रभो एष वे भगवान् साक्षात् दाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् माया लोकं गुडसर्दि वैष्णवो अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः यमन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृतम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समुद्रिशो ह्याद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्य निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्यं भूपानुकम्पितं त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयेत् त्यजन् कलेवरं योगे मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देव भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारूढलोचनोल्लसं मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा सुतवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णे शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरो
वैराग्य रागो पादिभ्या मामना तो भयलक्षणान् दान धर्मन् राजधर्मन् मोक्षधर्मान् व्यागस श्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः धर्मार्थकाम मोक्षस सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रबद्धतस्तस्य स्वकाल प्रतिपस्थित यो योगिनः सन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तत्तुरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीरे विमुक्त संगमनादिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभ सदीक्षयैवाशुगतायुधव्यध निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम तुष्टावजन्यं विसृजन्य जनार्दनं श्रीभीष्मवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकवनं तमालवर्णं रविकरगौरव राम्बरं दधाने बपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिस्तु मे न वद्या युधितुरग रजो विधुम्र विश्वक कचलुलिता श्रम बार्यलङ्कृतास्य मम निशिता शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोरवलयोरथं निवेश्य स्थितपपति परसैनिकायुरक्षणां ऋतपति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितप्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनपदाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरामहरदात्मविद्याय शरणरथि परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञामृतमधिकर्तु मप्लुतो रथस्तधृत सौनगवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णुरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीविता पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो कथितं यदि अन्यस्य पुरोहिण अश्रद्धधानानां यस्य ज्ञानमुदाच्छुकः सुतोवाच अभिफलद्धर्मराज पितृवत् रञ्जयन् व्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः कृतभो लोकमहिषि भ्रातरो महि जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशस्य त्रिविधं गतं किं ते कामसुरस्पारः मुकुन्दमनसो द्विजा अधिजनहुर्मुदं राज्ञः क्षुदितसे यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददृशपुरुषं कञ्चिद्दह्यमानोऽस्त्र तेजसा अंगुष्ठमात्रमौलं स्फुरत्पूरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडितपाशसमच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहु तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाहं गदापाणिमात्मानं सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभा भ्रामयन्तं कदामुः अस्रतेजसुखदयं निहारमिव गोपति वेदमन्दं सन्निकर्षे परियक्षतं कैत्यसौ वदय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुब विभो मीशतो दशयमास तत्रैवान्तर तदे हरि तत्र सर्वगुणोर्दर्के सानुकूलग्रहोदय जगे वंशधर पाण्डुर्भूय पाण्डुरिभुजसा तस्या प्रथमना राजा विप्रैर्धाम्यैक कृपादेवी जातकं कारयामास वासयित्वा समङ्गलं हिरण्यं गामहिं ग्रामन् हस्ते स्वान्नृपतिर्वरान् प्रादास्त्वन्नं च विप्रेभ्यो प्रजातीर्थे च तीर्थवत् तमसुरब्राह्मणास्तुष्टं राजानं प्रशयान्वितम् एषा ह्यस्मिन् प्रजातन्तपुरूणां पौरवर्षभः दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थमुपेयुषि रातो वनुग्रहार्थाय विष्णुनां प्रभो विष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरातम् इति लोके बृहच्छ्रवा भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान् युधिष्ठिरोवाच अप्येषवंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुर्वर्तिना स्विद्यसा साधुवादेन सत्तमा ब्राह्मणावुजु पार्थ प्रजापिता साक्षात् दीक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्यसन्दस रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यस यथा हौषिर्नरः शिवि यशो वितनतो स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनां दान्वीनामग्रडीरेश तुल्यस्सार्जुनयोर्द्वयो हुताशैव दूरधर्ष समुद्र इव दुस्तर मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधैर्वासो सहिष्णु वितराभिव पितामह समं साम्य प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय
सर्वभूतानां यथा दिवरमाश्रय सर्वसद्गुणमाहात्म्ये ये स कृष्णमनुव्रता रन्तिते वैवोदारो ये अतिरिव धार्मिक धृत्याबलि समग्रेशं प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहार्तैषो स्वमेधानं वृतानं परिपाशक राजर्षिणां जनयितां शास्तां स्वतपथगामिनां निग्रहितं कलेरैव भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युर्द्विजपुत्रोपसर्जपित प्रपश्यत्य उपश्रुतिमुक्तसंज्ञपदं हरे जिज्ञासितात् मयाध्यात्म्यो मुनिर्व्यासमुदात् सजौ ऋतुदं नृपगङ्गायां व्यासत्यध्याकुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश विप्रा जातककोविदा लब्ध्वा पचितया सर्वे प्रति जग्मु शोकान् गृहान् स एष लोके विख्याता परीक्षितादिति यत् प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायेन परीक्षित नरस्विव स राजपुत्र विवृतो आशु शुक्लैवोडुप आपुरीमाणं पितृभिः काष्ठाभिरिव स्वन्वहं यक्ष्यमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहाशय राजा लब्धतनो दग्ध्या वन्यत्रे करदण्डयो तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिता धनं प्रहीणा माजन्होरुदिच्यां दिशि भूरिशा तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर बाजी मेध स्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम् आहुतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा दुजेन नृपः उवाच कथितेन माशान्य स्वीहृतं प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञात कृष्णय सबन्धुभिः ययो द्वारपति ब्रह्मसार्जुनो यदुभिर्वृत ओम हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को, भागवत भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को जय जय हो। ओम सुतोवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौसारवाग्रत जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यस्सोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रं सानुज धृतराष्ट्रयोत्सुतः सारतः वृथा गान्धारे द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तराकृभिः अन्यास जामयः पाण्डवर्ज्ञातय स्वसुता स्त्रिय प्रत्युग्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंगम्य विधिवन परिस्वङ्गाभिवादने मुमुचो प्रेम वास्मकं विरहोदकण्ठे कातरा राजा तमर्हयान् चक्रे कृतशन परिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां सशृणुतं युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यान्यदेर्मोचिता यत्समाद्रिका कयावृतवर्तितं वत्सरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वामदण्डं यथावदगहकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वं सापादवर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्दरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहय अत्यक्राममदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यता शीघ्रं पश्यतं भयमागमत् प्रतिक्रिया न यस्यहं कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्यत किमु तान्नैरे धनादिभिः पितृभ्रातृपुत्र हतास्ति विगतं वयः आत्मा चं जरया ग्रस्त परगेहुमुपाससे अहो महीयसी जन्तुर्जीवितांसा यया भवान् भीमापवृजितं पिण्डम् आदत्य गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो तत्तस्य गरोदारस्य दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तत्ततै रसुभिः किहत तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषु पौरस्य निच्छतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्त्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धन अभिज्ञातगतिर्जह्यात् सवै धीरमुदाहृत यः स्वकात् परतो वेह
जातर्निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रवजेत् स नरोत्तमम् अथो दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतो प्रायशः कालं पुंसा गुणविकर्षण एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निःशक्रामव्रातिसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रतं चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्ष मनस्विनामिव सत्सम्प्रहार अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्नि विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च तत्र सञ्जयमासीनं प्रपच्छोद्विग्नमानस गावल्गडोगनस्थितो वृद्धो हीनस्य नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रारता पितृभ्यः क्व गतः सुहृत् अभिमयकृतप्रज्ञे हतबन्धोः सभार्यया आसं समानसमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः स्वस्यन् अरक्षता व्यसनतः पितृभ्यौ का गतावितः सुतोवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सुतो विरहकर्षिता आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विनिमग्य श्रोणिपाणिभ्यं विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनस्मरन् संजय उवाच नाहं वेदव्यवसितो पित्रोरवा कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबालो मोषितोऽस्मि महात्मवे अथा जगाम भगवान् नारदः सुहृतं प्रत्युत्थाया विवाद्याः सानुजोऽभ्यर्थयः निवसु युधिष्ठिरुवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवान् क्व गति गतावित अम्बा वा हतपुत्रार्गता क्व गता च तपस्विनी करणधारैवा पारे भगवान् पारदर्शक अथा भवासे भगवान् नारदो मुनिसत्तम मा कथञ्चन शुचो राजन यदीश्वरवशं जगत् लोकासबाला यस्य मे वहन्ति बलिमि सुतः स्वसंयुक्त नक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावनसि प्रोतास्तनन्त्यं बद्धा स्वदामभि वाक्तन्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीसुता यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमविह इच्छया क्रीडितु स्यात् तथैवेशच्छया नृणां यन्मयसे ध्रुवं लोकं मध्रुवं बाणचोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्य मज्ञानकृतमात्मना कथं त्वनाथा कृपणां वर्तेरस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिक कथमन्यास्तु गोपायत् सर्वग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानामपतानि चतुष्पदं फाल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदं भगवान् राजन्येक आत्मात्मना स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यन्तं माय रुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावन कालरूपवतिरोडो श्यामवाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्युयमोक्षध्वं भवेत् यावदिह सुरधृतराष्ट्रसह भ्रात्रा गान्धार्या च महास्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणाश्रमं गतः स्त्रोतोभिः सप्तवीर्या वै स्वरध्वनि सप्तधा व्यदत् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्तोत्र प्रचक्षते स्वात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अवक्षम् उपसन्तास्त्मा शास्ते विगतैषिण जितासनजितश्वास प्रत्याहृत षडीन्द्रिय हरिभावनयां ध्वस्तरजः सत्त्व तमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रैलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्धकरणाशय निर्वतीताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचल तस्यान्तरायो मयि बाभो सन्न्यस्ताखिलकर्मण सभा अद्यतनादराजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानोऽग्निभिर्देहे पत्न्युपत्नी सहोटजे वने बहिः स्थितां पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति विदुरस्ति तदाश्चर्यं निशम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयं शोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थनिसेवक इत्युक्त्वाथारुहितस्वर्गं नारदः सह तुम्बुरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाशुचः हरये नमः।
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, भागवत भगवान को, समस्त कुल पितृहरू को, यज्ञ पुरुष भगवान को, आजको आनंद को। सुत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णुबन्धु दिदृक्षया ज्ञातु च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितं व्यतीता कतिचन मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुन ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तुधर्मिण पापीयसं नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मना जीवः प्रायं व्यवहृतं साठमिश्रं सौहृदं पितृमातृस्वहृद भ्रातृ दम्पतीनां सकलगणं निमित्तान्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्मप्रकृतिं दृष्ट्वोवाचानुजं नृपः युधिष्ठिरुवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुबन्धुर्दिदृक्षय ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गतः सप्तादुना मास भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणां दिष्ट सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाकृष्टं भगवानुत्सृक्ष्यते यस्मान्न सम्पदो राज्यं दारा प्राणो कुलं प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकाशयदनुग्रहात् पश्यतोत्पतान् रव्याग्र दिव्यानुभवमान् सदैहिकान् दारुणां संस्तुतोद्भूराद् भयं नो बुद्धिमोहिनम् उर्वक्षि बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्गं पुनः पुनः वेपतुस्सापि हृदये आरादास्यति प्रियं शिवैषोद्यन्तमादित्यर्मवीरौत्य नला नला मामङ्गसारमेयो यमर्भिरेभत्यभिरुवत् स्वस्ता कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवो परे बाहस पुरुषव्याघ्र लक्षैरुदतो मम मृत्युदूत कपोतो यः मुलुक कम्पयन् मनः प्रत्युलोकस्य कुहानैरनिद्रौ शून्यमिच्छत धूम्रादिशबरिदय कम्पते भूषः द्रिवि निर्गातसमहस्तात् साकं च स्तनयित्नुवे वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजस्तम अस्त्रिग्वर्षन्ति जलदा बिभत्समिव सर्वदा सूर्यमहतप्रभं वश्य गर्हमर्दमिथो दिवि सशङ्कुलैर्भूतगणे ज्वलिते इव रोदसे नद्यो नदास् सुविधा सरांसि जमनांसि च न ज्वलत्यग्निरोजस कालोऽयं किं विदास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातर रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न ऋषभा व्रजे दैवतानि रुदन्ति व स्विद्यन्ति हृत्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामपुरोद्यानागराश्रम भ्रष्टश्रीनिरानन्द किमकं दर्शयन्ति नः मन्ये एतैर्महोत्पादैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना हतसौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कविध्वज तं पादयोर्निपतितमयथा पूर्वमातुरम् अथो वदनमाब्दिन्दुन् सृजन्तं नयनाब्जयो विलोक्यर्द्विग्नहृदयो वीक्षाय मनुजा नृप पृच्छति स्म सुरेन्मध्ये संसरन्तान् नारदेरितं युधिष्ठिरुवाच कच्चिदानर्तपुर्यानः स्वजना सुखमासते मधुभोजदसार्हः सातुतान्ध वृष्णय सूरो मातामह कच्चित् स्वस्यास्ते वाथमारिष मातुल सानुज कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुवे सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्य सात्मजा आशस्ते सस्नुषासे मम देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद्राजा ह्युको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुज हृदिक सत्सुगो क्रूरो जयन्त गतसारणा आसदे कौशलं कच्चित् दे च शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सातुतां प्रभु प्रद्युम्न सर्वविष्णूनां सुखमास्ते महारथ गम्भीरयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत सुशेषणाचारुदेष्णश्च जाम्बुपतिभूतः अन्ये च काष्णीप्रवरा सपुत्रा ऋषभादय तथैवानुचरः सौरे श्रुतदेवोद्दवादय सुनन्दनन्दशिष्णस्य ये चान्ये सातुतरसवा अपि स्वस्त्या सते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रया
अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदा भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कचित् पुरेषु धर्माय सुगमास्ते सुहृद्व्रता मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यद् कुलाम्भोदा वाद्योऽनन्त सखुपुमन् यद बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यद वेचिता क्रीडन्ति परमानन्द महापौरिषका व्रजा यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो दृष्टसहस्रयोषिता निर्जित्य सङ्ख्यधृतसास्तु दासिषो हरन्ति वज्रा युधवल्लभोषित यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीवनो यदो प्रवीराह्यकुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रे वीराहृतं बलात् सवां सुधर्मसुरसोत्तमुच्चितां कचिते नामयं तात भ्रशते विवासि मे अलब्धमानोऽज्ञात किं वा तात विरोचित कचिन्नाविहतो भावे शब्दादिभिरमङ्गलै न दत्तमुत्तमार्थिव्यय आशयत प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणबालं गाम्वृद्धं रोगिणं स्त्रीं शरणोपसृतं शतं नात्याक्षी शरणव्रत कच्चितं नागमो गम्य वसुत्कृत्या स्त्रियं पराजितो वाथ भगवान्नोत्तमैर्नाशमे पथि अपि स्वितपर्यभुङ्क्त्वास्तं सम्भोज्यन् वृद्धबालक जुगप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमं कचित् पृष्ठतमस्तमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्यो स्थिरहितो नित्यं मन्यस्यते अन्यथा नरुक जय जय श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवर्तिको नामोत्सव हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को, भागवत भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को हरे नमः। श्रुतवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रातराज्ञा विकल्पित नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविक्लेशकर्षित शोकेन शुष्यद् वदन हृत् सरोजहतप्रभ विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत प्रतिभाषितं कृष्ण संसव्य शुचः प्राणिनां मृजनेत्रयो परोक्षेण समन्नद्ध प्रणयत कौण्ठकातर सख्यं मैत्री सहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्यः बाष्पगदगदया गिरा अर्जुनवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे वरतं तेजो देवविस्ममनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शन उक्थेन रोहितो हे समृतक प्रोच्यते यथा यत्संश्रयाद द्रुपदगेह मुपागतानां राज्ञं स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहतस्य मत्स्य सञ्जीकृतेन धनुषाधिगतां च कृष्ण यसन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदामिन्द्रं च सामरगणतरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्व्योहरनुनृपतयो बलिमद्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रि महन्मखार्थे आर्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्य तेनाहृता ब्रह्मधनाथमखाय भूपायन् यन्मोचितास्तदनयन बलिमद्वरेते पत्न्यास्तवाधिमखक्लिप्तमहाभिषेक श्लाघिष्ठचारुकवरं कितवैशवाय स्पृष्टं विकीर्य पतयो पतिताश्रुमुख्या यतस्त्रियो कृत हते स विमुक्तकेशा यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छाद् दुर्वासशोरी विहितादय दयुताग्रभुगीय शान्ता साकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममस्तु सलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणे विस्मर्जितं सगिरिजोस्त्रमदान्विजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदर्शनार्थं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणममरातीव दाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषित पुरुषेण भुम्ना यद्बान्धवः कुरुबलाब्धि मनन्तपारमेको रथेन ततरेऽहमतार्यसत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं वृणिमयं च हृतं ऋषिरोभ्य यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य
चमस्मदभ्रम राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डिताशु अग्रेसरो मम विभो रथयूथपानामायुर्मनांसि सदृशां सहोजात्सत् यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण न तृप्तिर् गतशलैर्सैन्दव बाल्हिकाद्यै अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुनुर्हरिदासमिवासुराणि सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरे मे यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाह मरयोरथिनो भविष्टन् न प्राहरन् यद्भवा भवा निरस्तचित्ता नर्माण्युदा द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवत शशाः यथा हि श्रुत्यात्म बीजात कोविदा समाधिशन् विप्र महद्गुणस्तथा सौत्तरस्य तनयमुपयमैरावतीं जनमे जयादिशतु चतुरस्ता तस्यात्मुत्पादयत् सुतान् आजहाराश्वमेधास्त्रीन् गङ्गायाम्बुरिदक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरा निजग्राहुजशा वीरः कलिं दिग्विजय क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं वदा सौनकुवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजय नृप नृदेव चिह्नधृक् शूद्रकोशौ गाम्यः पदाहनत् तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथ भाष्यपदाम्भोज मकरन्द लिहां सतां किमन्नै रसदालापैरायुषो यद् सदव्यय क्षुद्रायुषं नृणामङ्गमर्त्यानामृतमिच्छतां यो पहुत भगवान् मृत्युसामित्रकर्मभिः न कस्मिन्म्रियते तावद् यावदास्त इहान्तक एतदर्थं हि भगवान् आहुत परमर्षभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मंदस्य मंदप्रज्ञस्य भयो मंदायुषस्य वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः श्रुतवाच यदा परीक्षिते कुरुजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिने निशम्य वार्तामनति प्रियां ततः सरासनं संयुगशौण्डिराददे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितं पुराद् मृतो रथास्वाद् विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गत भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य च गृहे बलिं तत्रोपशृण्वान् स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगृह्यमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसा स्नेहं च वृष्णिपारथानं तेषां भक्ति च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्ट प्रत्युज्जिभ्रीं त्रिम्बितलोचन महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामन सारथ्यपारस दशे वनसौख्यदौत्याभिरासनानुगमनस्तव न प्रणामाद् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगद प्रणति च विष्णोर्भक्ति करोति नृपतिः शरणारविन्दे तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां प्रतिमन्वहं नातिदुरेक्लास्वरे यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्यगां पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरं धर्मोवाच कच्चिद् भवेद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासि स्म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्यते भवति मन्तराधि दूरे बन्धु शोचसि कञ्चनां वा पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपाद नात्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणाम् आहोसुरादिन हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् मघवत्यवर्षति अरक्ष्यमाणः स्त्रियोर्विवालान् शोचसतो पुरुषा दैरिवार्तान् वाचं दैवीं ब्रह्मकूले कुकर्मन् न्यब्रह्मण्ये राजकुलाकुलाग्रन् किं क्षत्रबन्धुन् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरपरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासस स्नानभ्य वायुन्मुखजीवलोकं
ते भूरिभरावतारं कृतावतारस्य हरेर्धरिद्रे अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममाचाक्षतवादिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनं बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगं धरण्योवाच भवान् हि वेद तत्सर्वयन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहि सत्यं शौचन्दया शान्तिस्त्यागः सन्तोषार्जवं शमोतमस्तपः साम्यं तितिक्षो परति श्रुतं ज्ञानं वै विरक्तिश्वैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातन्त्र्य कौशलं कान्तिर्धैर्य धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रशयशीलं सह ओजो बलं भग कामिरस्थैर्यमास्ति किं कृतिमनुनाहं कृति एते चाने च भगवन्नित्य यत्र महगुणा प्रार्थ्य महत्वा मिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानां चानुशोचामि भवन्तं साम्रोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वरुणास्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथिं यदपाङ्गमोक्षं कामस्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना शास्त्री सुवासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगममलं भजते नुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्गकुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवता समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृज दुष्म्यति तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवशं राज्ञा मोक्षोहिणी शतमपानुदात्मतन्त्र त्वां दुस्तनुमूनपदा पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुसुराम्यमबिभ्रदङ्गं का सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मितबल्गुजल्पै स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिबिटङ्किताय तयोरवं कथयन्तु पृथिवीरे धर्मयो सदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सूतवाच तत्र गोमीथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे निर्बलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं मे हन्तमिव बिभ्यतं व्यपमानपदैकेन सीदन्तं सुद्रताडितं गां च धर्मदुगां दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवशं साश्रुवदनां श्यामं यवसमुच्यतां पर्वच्छ रथमारुणकार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मत्सरणे लोके बलाद्धस्य बलान् बलि नरदेवो शिवेशण नटभर्तकर्मणा द्विज यशं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधर्मना शोच्योम्यशोच्यान् रहसि प्रहरन् बदमरसि त्वं वा मृडालधवलः पादैर्न्यूनवदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्भिते भूतले नुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुच मा सौरभेयानुशचो वेतु ते वृषलान् भयं मारुद रोदिरम्पभद्रं ते शिखाखलानं महिषास्तरे यस्य राशिप्रजा सर्वास्त्रस्यन्ति साधुभिः तस्य नश्यन्ति कृतिरायुधभर्गयुगति एषा राज्ञं परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रह एनं वदिष्यामो भूतद्रुहमसत्तम को वृश्चत् तव पात्रास्त्रेण सौरभेयं चतुष्पदे मा भूवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञा कृष्णानुवर्तिनम् आख्याये वृषभद्रं वः साधूनां कृतागशाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं प्राधानं पार्थानां कृतिदूषणं जनो नागस्ते युञ्जेत सर्वतोस्य च मदवयं साधूनां भद्रमेव स्यादसाधु दमने कृते अनागस्त्वेय भूतेषु यः आगस्त्य क्रीं
निरकृङ्कषः आहर्तामस्मि भोजं साक्षादमर्त्यस्यापि साङ्गतं रागैः परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोन्यान् यथा शास्त्रमनापद्योतपथानिः नेह धर्मवाच एतद्वा पाण्डवे यानं युक्तमार्ताभयं वचे येषां गुणगणैः कृष्णदौत्यादौ भगवान् कृता न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीतो वाक्यभेदमिव हिता केचिद् विकल्पवशन आहुरात्मनमात्मनः दैवमन्यपरे कर्मः स्वभाव मम रे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादितिः केष्वपि निश्चय अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया श्रुतोवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदपरिचष्टतं राजोवाच धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मसेवी वृषरूपधृक् यत धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसस्सापि भूतानामिति निश्चय तपशौचं दया सत्यमिति पादा कृते गिरः अधर्म सौश्रेय भगना मया संगमदैस्तव इदानीं धर्मपादसे सत्यं निर्वतयद्यत तं जिघृत्य धर्म यमनृते नैदिता कलि इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सति श्रीमद्भीस्तत्पदन्यासे सर्वतः कौतुकासुता शोचते श्रुकला साधु दुर्भगे भजिताधुना अब्रह्मण्य नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्महि चैव सात्वन्ति त्वा महारथ निशातमादति खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिग्राह सुमभिः प्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद् भयविह्वलं पतितं पादैर्वीरा कृपया दिनवत्सला शरण्यो नावधीत् लोक्य अहं आह चेदं हसन्निव राजोवाच न ते गूढाकेशयशोदराणां बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति कञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्व बन्धु त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे स्वनो प्रवृत्तो यमधर्मपूगा लोभो नृतं शौर्यमनार्यमोहो ज्येष्ठा च माया कलह सदम्बा न वर्तितव्यः तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्माव्रते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरयज्ञवितान विज्ञा यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमाना युज्यमूर्तिर्यजतां सं तनोति कामानुमोघं स्थिरजङ्गमानां मन्त्रबहिर्वायुरि वैशात्मा श्रुतोवाच परीक्षितैदमादेश सकाले जातवेपथो तमुद्यता सीमाहेतं दण्डपाणिमिव दत्तं कलिरुवाच यत्र क्वत्र पश्यामि सर्वं तु भाग्य लक्ष्ये तत्रापि त्वामत्तेषु सरासरं तन्मे धर्मव्रतं श्रेष्ठस्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियते वश्यम् आतिष्ठस्तेऽनुशासनं श्रुतवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मिन् स्थानानि कलयो ददौ द्यूतं पानं श्रियं सुना यत्र धर्मचतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु तत्त्वो नृतं मदं कामं विरजो वैरं च पञ्चमम् अमुनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्म प्रभो कलि औत्तरेण दत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषो पुरुषः क्वचित् विसेवतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु विश्वस्य वृषस्य नष्टास्त्रेन् पादन् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्धता स्वास्य महिंसा समवर्धयत् स्वयेष यत् धर्मस्य आसन पार्थिवमोचितं पितामहेनु पन्यस्तं राज्ञारण्यं विवक्षिता आस्ते धूनां स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रीवल्लसन् गजाउहै महाभाग शक्रवर्तिप्रियछवा इत्थं भूतानुभावो यमभिमन्युश्रितो नृपा यश पालयित क्षोणी यूयं सत्राय दीक्षिता हरये नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर भगवान को सुतोवाच यो वै द्रोण्यस्त्रबिंलुष्टो न मातुरुदरे मृत अनुग्रहाद् भगवत कृष्णस्याद् भूतकर्मण ब्रह्म कोऽपि थाथताद् यस्तु तच्छकात् प्राणविप्लवात्
न सम्मुमोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशय उत्सृज सर्वदा संगम विज्ञाताजित संस्थिते वैयासकीर्जहो शिशो गंगायां स्वं कलेवरम् नोत्तमश्लोकवरदानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमन्तोऽन्तकालेऽपि संस्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलेन प्रवेद प्रविष्टोऽपिह सर्वदा यावदिषु महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट् यस्मिन्नहनि यर्हेव भगवानुत् ससर्जकां तदैवोऽनुवृतो सावधर्मप्रभवा कलि नानुद्वेष्टिकले सम्राट् सारंग इव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् किं नु बालेषु सूरेण कलिना धीरवीरुण अप्रमतेषु यो वृकोन्त्रेषु वर्तते उपवर्णितमेतद् वः पुण्यं वारेक्षितं मया वासुदेव कथोमेतमाख्यानव्यत पृच्छत यायाः कथा भागवत कथनीयोरुकर्मण गुणकर्माश्रया पुंभि संसेव्यास्ता बहुशिवि ऋषियुजु श्रुतः जीवाशमा सौम्य शाश्वतीर्विषितं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिना कर्मण्यस्मिन्नना श्वासे धूम्रात्मना भवान् अपायेति गोविन्द पादपद्मा समं मधु तुलयामल्लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवं भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष को नाम तृप्यत रसवित् कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुर्योगेश्वराय भवपादमुख्या तन्नो भवान् वै भगवद्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्य मदप्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासिकशब्दितेन भेजे खैन्द्रध्वजपादमूलं तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थमाख्यानमत्यत भूतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् श्रुतोवाच अहो वयं जन्मवृतोद्य हास्म वृदानुवृत्त्यापि विलोम जाता दास्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानाभिविधानयोग कुतः पुनर्गृह्णतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणात्वाद् यमनन्तमाहो एतावतालां ननुसूचितेन गुणैरसायां निशा अतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयितो विभूति यशाङ्घ्रिरेणुञ्जुषते न भीप्सो अथापि यदपादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चो भरितां हणाम्बशेषं पुनात्यन्ततमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजान्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यः यस्मिन्नहि शोपशमं स्वधर्म अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्वीरा राचक्ष्य आत्मा भगमोत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतित्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपश्यत एकदा धनुरुद्यमे विचरणं मृगयाम्बने मृगाननुगतं श्रान्तः क्षोदितस्त्रीषितो वृषं जलाशयमचक्षाण प्रविशेदमाश्रम ददर्शमुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारत स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमिव क्रियां विपकिरणजटासमरौरवेणाजिरेण च विषम्यस्त्यालुकं रुदकं तथा भूतमया च अलब्धतृणभूम्यादिरसं प्राप्तार्घ्यसुनृत अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानस्सुगोपः अभूतपूर्वसहसात् शूद्रेभ्यामर्दितात्मनं ब्राह्मणा प्रतिभूतद् वदे ब्रह्मन्मत्सरपो मन्युव स तु ब्रह्मर्षयोरंसे गता सुमुरगं रुषा विनिर्गच्छन्ध अनुकोष्ठनिधाय पुरमार्गवत् एष किं निवृता शेषकर्णो मिलिते क्षण वृषासमधिरोहोस्वित् किं नु स्यात्क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालगौरवकै राज्ञाज्ञं प्रापितं तादं श्रुत्वा तत्रेतमब्रवीत् अहो अधर्मपालानां प्रेव्यां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां सुनामिव ब्राह्मणैः छत्रबन्धुभिः द्वारपालै निरूपित शकतं तद्गृहोद्वास्तसभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गति भगवती शास्त्रयुत्थपथगामिनीं मदं तदभिन्न सेतुना नद्याः सास्मि पश्यत मे बलं
इत्युक्तारोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालक कौशिक्यापौपस्पृश्य वाग्व्रजं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलाङ्गारे चोदितो मे ततद्रोहं ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं कलेवरं पीतरं वीक्षितो घारतो मुक्तकण्ठोरुरोधः सभुवाङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुप्त सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज पुत्रं प्रपच्छ वत्स कस्माद् विरोधिषि केन वा ते अपकृतमित्युक्तं स निवेदयत् निशम्य सप्तमतदर्ह नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बतामहो महदज्ञते कृत मल्पीयसे द्रोह उरुर्धमोद्रित न वै नृभिर्नरदेवव्राघ्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विसहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाभृज अलक्ष्यमाणे नरदेव नाने रथङ्गपाणा वयमङ्गलोक तदा हि चौरा प्रचुरो विरङ्क्ष त्वरक्ष्यमाणो विवरुद्धं रूथपद क्षणात् तदद्यन पापमुपैत्यन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसुर्विलम्बकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोरथान् पुरुदस्य भोजना तदार्यधर्मस्य विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रीत्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मा सुनं कपीनामिव वर्णशङ्कर धर्मपालो नरपति सतो सम्राट् बृहत्सभा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्य हयमेधयाट् श्रुत्युट्श्रमयुतो दीनो नैवास्मा छापमर्हति अपोपापेषु स्ववृत्तेषु बालेनाः पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृतं विप्रलब्धं सप्त्वा क्षिप्ता हतापि नाश्यः तत् प्रतिकुर्वन्ति न तद्भक्त्या प्रभवोभिः इति पुत्रकृतो घेन सोनु तप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राजा नैवाघं तत् चिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परेर्द्वन्द्वे नियोजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यथा आत्मा गुणाश्रय हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्णचंद्र भगवान को भागवत धर्म को ज्ञान महायज्ञ को आत्रेय ऋषि को आज को आनंद को नेपाल जननी को वैदिक सत्य सनातन धर्म को वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय हो। श्रुतवाच ठीक है करे ठीक से एकदम। श्रुतवाच महीपतिस्त्वत्थ तत्कर्म गरिहं विचिन्तयन्नाम कृतं सुधर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलना दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् ततस्तु कामं त्वगनिष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेव मद्दा अद्यैव राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न भेवोत पापीयसे द्विजदेव गोभ्य सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोति यथा मुनेषु सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्य ससाधु मेने न चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये मम च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवा मदिमन्यमान उपाविशदप्राय ममर्त्य नद्यां या वै लसुश्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रेवभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनादिलोकानुभयत्र शेषन् कष्टाम् न सेवेतमरिष्यमाण इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेय प्रायोपवेशम् इति विष्णुपद्यं दद्यो मुकुन्दाङ्घ्रे मनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्ग तत्रोपजगमोर भवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या प्रायणतीर्था भिकमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्त अत्रेर्वसिष्ठश्चवनः शरद्वा नरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोतराम उत्तथ्य
इंद्र प्रमदेत्यमाहो मेधातिर्देवलः आष्टिसेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और्वा कवश कुंभयोनि द्वैपायनो भगवन्नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्यां राजर्षिवर्यां अरुणादयश्च नानार्षि यः प्रवरान् समेत नव्यर्षद राजा शिरसा वन्दे सुखोपविष्टे स्वततेषु भूय कृतप्रणाम शुचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो गृहे विगृहीतपाणि राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानो ग्रहणीयशीला राज्ञाकुलं ब्राह्मणपादशौचाद् दूराद्विसृष्टं बत गरिहकर्म तथैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहस्व वीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूमो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तमोपयान्तं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टकुहकस्तक्षको वा दशत्तलं गायत विष्णुगाथा पुनश्च भूयाद्भगवत्यानन्ते रतिप्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महत्यसु यामुपयामि सृष्टि मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य इति स्म राजाद्यवसाय युक्तप्राचीनमूलेषु कुशेषु धीर उदङ्मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्य स्वसुतन्यभार एवं च तस्मिन् नरदेव देवी प्रायोपविष्ट दिवि देवसंगा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयसनेदो महर्षय वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाम् ऊचु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणार्भिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्यं चित्रं भव सुकृष्णं समनुव्रतेषु यध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वगाम सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजसकं जस्कं विशोकं यास्त्यायनं भागवत प्रदान आश्रित्य तद्विश्रीगणवच परीक्षित समं यदुच्योद गुरुसाव्यलेकम् आभासतेर्नानभिनन्दयुक्ताय शुश्रूषमाणसरितानि विष्णु समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा श्रीपीष्टे निहत वामुत्र च न कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलं ततः सबः पृच्छ्यमिमां विपृच्छे विश्रम्य विप्रा इति कृत्य यातायां सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यं शुद्धं सुतात्रामृषताभियुक्ता तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानतो अपेक्षा अलक्षलिङ्गो निजलावतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेश तं द्वेष्टवर्षः सुकुमारपाद करुर्बाहुं सकपोलगात्रम् चार्वायताक्षुन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रबाणं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रो पृथुतुङ्गवक्षसा मावर्तनाभिबलिबल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णवेशं प्रलम्बबाहु स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदापीच्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्स्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः स्थलक्षणाज्ञया अभिगुणवर्चसां सविष्णुरातोतिथय आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने स्वोपविशेषा पूजिता स संवृतस्तत्र महान् महीयस ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगै बेरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहक्षतारा निकरैपरीत प्रशान्तमासेन मुकुण्डमेधजं मुनिनृपं भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धावहितं कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छत् परीक्षितुवाच अहो अद्यं वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः येषां संस्रणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा
किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः सान्निध्यात् महायोगिन् पातकानि महात्म्यपि सद्यो नस्त्यपि वै पुंसां विष्णोरिव सुरेधरा अभिमे भगवान् प्रेतः कृष्णपाण्डुसुता प्रिय पैतृश्वासेयवृत्त्यर्थ तद्गोत्र स्यात् बान्धव अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानं संसिध्यस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा यश्रोतातव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मणगृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते ह्यावस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् श्रुतवाच एवमाभासितः प्रबुदं रसातलं महातलं विश्वमिसृजोतगुल्फौ तलातलं वै वृषस्य जङ्गे द्वैजानुनि सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वेतलं सातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नवस्थलं च नाविसरो गृह्णन्ति पुरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर वदनं वै जनमस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसं सत्यं तु शेषासि सहस्रशीर्ण इन्द्रादयो बाहुरस्त्राकरणं दिशस्त्रोत्रं ममुष्य शब्द दस्रौ परमस्य नाशे घ्राणस्य गन्धो मुखमग्निरिद्ध देवरक्षणे चक्षुरभूतपतङ्ग पक्षमाणि विष्णुरहनियुवे च तद्भ्रुविजृम्भ परमेष्टिधिष्ण्यमापस्य तालुरस एव जिष्ण छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टा यमः स्नेहकला द्विजानि हासो जनुन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्ष वृणोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽवृष्टं कस्तस्य मेढं वृषणौ च मित्रो गोक्षे समुद्रागिरयोस्ति सङ्गा नद्योस्य नाड्योऽथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्वपतेर्नृभृन्द अनन्तवीर्यश्वसितं मातरेष्वा गतिवर्यः कर्मगुणप्रवाह ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहन् वासस्य सन्ध्या कुरुवर्य भुम्न अव्यक्तमाहुरे हृदयं मनस्स सत्सन्द्रमा सर्वविकारकोश विज्ञानभक्तिं महिमानमन्ति सर्वात्मनोऽनन्तकरणं गेत्रम् आश्वास्वतरयुष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगा पशवो श्रोणिदेशे वयंसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुष्यनिवास गन्धर्वविद्याधरचारण अक्षरं स्वरस्मृतिरसुना रसुरानि कवीर्य ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा बीडुररुङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णे नानाविधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्मवितानयोग यानसावीश्वरविग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषेस्तविष्टे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्मि कञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यतः आत्मपाद जय जय ओम हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण चंद्र भगवान को भागवत धर्म को नमो भगवते वासुदेवाय। तपाईँ घर आउनु गाह्रो कसैले गाह्रो भएको छ नि जानुस् है एकदम छिटो कोही तल कोही माथि गरेर आउनु पर्यो। ध्यायति धीरपार्थये परिब्रह्म सत्यञ्जलौ किं पुरुधन्न पात्र्या दिग्बल्कलादौ सति किं दुकूलै चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति वीक्ष्य नैव्याङ्घ्रिपं परवृतं सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्रागुहाः किमजितोपतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनधुर्मदान्दान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मप्रियोऽर्थो भगवान् अनन्त तं निवृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतु परमस्य यत्र कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता मृते पशूना सन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिना यते क्षणं कथं बकिञ्चल्कविसङ्गवाशसं लसन् महारत्नहिरण्यमङ्गतं स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलं
उन्निद्रहृतपङ्कजकर्णिकालय योगेश्वरास्थापितपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्दरं अम्लानलक्ष्म्यां वनमालयाचितं विभूषितं मेखलयाङ्घ्रिगुलिकैर्महार्धनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धमलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानानन हासपेशलम् अधीनलीला हसिते क्षणोल्लसद वृषङ्गसंसूचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं यावन्मतो धारणयावतिष्ठते एकैकस्वङ्गानि धियानुभावयेत् पादानि यावद्दशितं गदावृज्जितं जितं स्थानमपय्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परापरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोग तावस्तवीयं पुरुषस्य विरूपं क्रियावसाने प्रियता स्मरेत स्थिरं सुखं शासनमाश्रितो यतिर्यस्य क्षेत्रज्ञयतां निनयत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषां परं प्रभु कुतो नु देवा जगतां यैश्वरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमस्य न वै विकारो न मोहन् प्रधानं परं पदं वैष्णवमाननन्ति यत्तद् यन्नेति नेतीत्य तदुत्श्रीशिक्षव विसृज्य दौरात्म्यन मन्यसौहृदा हृदोपगुह्या पदं पदे पदे एथमुनिस्तूप सुपरमिद व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्य सुरन्धिताशय स्पर्शाणि नानापीड्य गोदं ततो नीलं स्थानेषु षट्शून्यमयोजितक्लमम् नाभ्यं स्थितं हृद्यधीरप्य तस्मा दुदानगत्यो रसितं नयन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वमात् स्वतालमूलं शनकैर्नयेत तस्माद्भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्धसन्ता सप्तायतनोऽनपेक्ष स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुटण्ठदृष्टिर्निर्विद्यमूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्यन् नृपपारमिष्ठं वैहासना मूतयति राम्रो फुल छ भने मात्र राख्दिनुस् राम्रो राम्रो फुलहरु ती फुल कति बाँकीमा पारले हाम्रो एउटा नेपाली सर चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि सप्ताहमा हजुर त्यो धुपबत्ती हो अहिले गर्ने त भने हैन ब्रो धुपबत्ती गुरु धुपबत्ती पनि अहिले भन्नुभयो हो कोरे तीनटा कति हाल्नु तीनटा कोरे आरती छोटो आरती छोटो आरती दियो फुलबारी भएर जानु गणेश त रोज्नु पर्छ गल्ती गरिदिन्छ गणेश त देख्दा पनि ओके तपाईहरु सप्ताहलाई ल्याउँदा कायदा हुने हो अहिलेदेखि पुरै प्र्याक्टिस कपाल फाल्दै होइन बसिहाल्छ छैन फेस हेर्छ न फेस हेर्छ सुहाउँदा पनि कति सुहाउँदो ओम मा ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृत ऊरु तदसिद्धवैश्यः पदव्यागं शूद्रो अजायत वनस्पतिरस्तभूतो गान्धाट्यो गाण्ड उत्तम अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्वः धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् अग्रापयं दीपम् श्रोत्राद
माथि चढाउनु हजुर होइन। होइन त्यति राख्ने हो नि त त्यतिकै राख्नु। तुलसी राखेर यसो राख्नुहोस्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शिशुणोर्देव देवः समव्रतता पदव्यां भौमृदेशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सम्मुखो प्रसीद परमेश्वर ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा पंचप्राणेभ्यो नमः धेनु मुद्रां प्रदर्श्य मुखशुद्ध्यर्थे मुखवासार्थे ताम्बूलं जलं समर्पयामि ओम त्यहाँ राख्नुहोस् र जल अर्पण गर्नुहोस् तुलवाङ सुकमेलको ओम जतपुरुखेण हविखा देवाजिन्यमतन्वत वसन्तोस्यासीदा जङ्घ्रिग्मैदमः शरद्दविः मुखवासार्थे ताम्बूलं जलं समर्पयामि तदङ्गत्वेन एउटा सानो पैसा राखिदिनुहोस् हिरण्यगर्भः समव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेगासीत् सदा धारपृथिवीं व्यामुते माङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम व्यामुते माङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम ओम भूर्भुवः स्वः तदङ्गत्वेन अब थोरै जोत थप्नुहोस् त्यहाँ फेरि थोरै जोत थप्नुहोस् त्यहाँ जोत थप्नुहोस् के बाती भन्नु पर्यो बत्ती थप्नु पर्यो ल ल ल ल ल भयो यसो बुझाउनुहोस् आरात्रि पार्थिव गौरजः रजुरप्रायधामविः दिवः सदा गुसि बृहति विदिशसात्वेकं व्रतते तमः ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वरसो ज्योतिर्वसः स्वाहा सूर्यो रसो ज्योतिर्वसः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अब त्यही आफ्नो ठाउँमा एकपटक घुम्ने सप्तास्यासन परिगय श्री सप्तसमिदः कृताः देवा जदैनन्तन्वाना अवदनं पुरुषं वसुम्ब मुखवासार्थे ताम्बूलं जलं समर ओम आरात्रि किं निवेदयामः तदङ्गत्वेन अब हातमा खोलिनुहोस् हातमा खोलि सबैले पुष्पाञ्जलि ओम नमः शिवाय ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति तरुणीकराग्रविगलत कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् सहस्रनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दादं किशोराकृति इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पाद्रुमाणि ध्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः नारायणायेति समर्पयामः। बोलिए सदानंद भगवान को जय, भागवत भगवान को जय, सूत महामुनि को जय, स्कंद महिमा को जय, स्कंद महिमा को जय, आनंद को जय, सत्य सनातन धर्म को जय, पार्वती पतय हर 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 महादेव शंभो। अब दिउँसाका आरै ताप्न पर्दैन, बिहानका र बेलुका मात्रै। अब त्यही आफ्नो ठाउँमा जसरी मिल्छ त्यसरी नमस्कार अथवा दण्डवत अथवा प्रणाम जे मिल्छ त्यही गर्ने। अनि औँठी खोल्ने यहाँ राख्ने, 10-15 मिनट वहाँ गएर जे दिनुहुन्छ चुप्पक्क खाने, चपक्क यहाँ आएर बस्ने। सञ्जीवको साष्टाङ्ग दण्डहरू गरेर नि भयो त्यो ठाउँ छ। हामी यहीँ ल अब औँठी निकाल्नु हजुर यहीँ आफ्नो अगाडि राखेर अर्को हुन्छ